Good morning, everyone. Welcome to another episode of Health Dabba. Today we are dealing with the lifestyle diseases. Dr. Meenakshi will be joining soon. She's stuck up with some technical glitch. Before we dive into the topic, I'll request Joshi ji to do the morning prayers. Joshi ji? Yes. Thank you, Vamsi ji. गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की प्रार्थना गायत्री मंत्र और रविवार है। सभी लोग कमर गर्दन सीधी कर लें। एक बार ओम की ध्वनि, पश्चात गायत्री मंत्र। अरे सांस ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हिंदी भावार्थ। हे प्राण, पवित्रता एवं आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ एवं सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक और ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। तो ओवर टू मीनाक्षी वामसी जी। थैंक यू। Thank you, sir. Thank you for that beautiful prayer. Meenakshi ji want me to share Dr. KK's video one of Dr. KK's video. So I'll be sharing that and she will be joining in between. Namaskar. I am Dr. K.K. Agarwal, President Heartcare Foundation of India and Group Editor-in-Chief of MedTalks. The question of the day is, which chest pain are not heart pain? When I say heart pain, means angina, impending heart attack or a heart attack. Any chest pain which can be pinpointed by a finger, localized by a finger, cannot be a heart pain, because heart pain is diffuse and the patient will come back with the whole palm that there is this much area of the chest which is showing discomfort or which is showing a pain. And any pain which is transient, lasting less than 30 seconds, is not a heart pain. The patient will say, my pain is here, is not a heart pain. Heart pain is always lasting more than 30 seconds. And if it is lasting more than 20 minutes, suspect a heart attack. Remember, the rules of pain in heart. Any pain which can be pinpointed by a finger and any pain which lasts less than 30 seconds are not angina, are not heart pains. Thank you. So that was Dr. So that was Dr. KK explaining us about our chest pain and angina difference के बारे में बोल रहे. So to start the day with Dr. KK's video is always a pleasure to see him. Health Dabba. So Dr. Meenakshi joined. She will take over now. Thank you. Thank you so much, Vamsi ji, for starting off the show for me today. I'm extremely sorry for the delay to all of you. I'll just, no, why does it not? So the topic, as you can guess, is about heart disease today. So I'll just quickly, I think we are running super late. So I'll try to be a little quick. So again, हम लोग lifestyle diseases के बारे में बात कर रहे हैं, and we have already discussed stroke, we have discussed hypertension, and we have discussed diabetes yesterday.
So आज again हम heart disease के बारे में हम बात करते हैं. This is also one of the most important topics that is it's the need of the day to discuss these problems. So let's begin. So heart disease के risk factors क्या क्या हैं? Who is at risk of having heart disease? If you have high cholesterol, if you have high blood pressure, or if you have diabetes, अगर आपको इन तीनों में से कोई भी lifestyle diseases हैं, तो आपको heart disease भी आपको हो सकती है. Smoke, अगर आप स्मोकिंग करते हैं तब भी आपको हार्ट डिजीज हो सकती है. अगर आप ओवरवेट हैं तब आपको हार्ट डिजीज होने की आशंका ज्यादा है. इफ यू आर नॉट गेटिंग इनफ फिजिकल एक्टिविटी, अगर आप मोबाइल नहीं है, अगर आप ज्यादा हिलना नहीं पसंद करते, इफ यू यू आर अ काउच पोटैटो, यू आर डेफिनेटली एट रिस्क ऑफ अ हार्ट डिजीज. एंड इफ यू डोंट हैव अ हेल्दी डाइट, सो आई थिंक दिस इज ऑल कॉमन सेंस, बट इम्पॉर्टेंट फैक्ट इज दैट येस, हार्ट डिजीज जो है, it is one of the leading causes of the lifestyle diseases in the country at the moment. And ये काफी so जो हम heart attack के बारे में हम सुनते हैं, this all it is a gradual disease. ये धीरे धीरे शुरू होती है, and इसको सही समय पे रोकना बहुत जरूरी होता है. So there are risk factors. What I'm coming to is that there are risk factors that you cannot control. जैसे कि आपकी हेल्थ, फैमिली हिस्ट्री आपकी ऐसी है, मतलब आपके घर में किसी को हार्ट अटैक हुआ है, some close relative has had it, you cannot change that. You cannot change that you are a male who is so females जो हैं, until they have their menstrual periods, they are protected. So उसके बाद में their risk is the same as a male. So males and females, after the age of maybe 55, they'll have the same risk factors. But uske pehle, it is very uncommon for us to hear that a female in her fertile years has gotten a heart attack. So agar aap ek male hain who is in that age group, there is nothing that you can change about it. You cannot change that you might have had a previous stroke or a heart attack. You cannot change that your age is such that you are more vulnerable. You're in that middle age group. But what you can change is you can control your diabetes, you can eat healthy, you can control your high blood pressure with medicines, you can control your obesity, अपना वजन आप कंट्रोल कर सकते हैं, आप अपनी इनएक्टिविटी को कंट्रोल कर सकते हैं. अगर आप इनएक्टिव रह रहे हैं, आपकी इनएक्टिव लाइफस्टाइल है, then you can control that as well. High blood cholesterol अगर आपके हैं, this is again can be controlled by medicines. And अगर आप smoke करते हैं, then this is also something that you can control. So your age and family history also affect your risk of heart disease. Your risk is higher if you're a woman over the age of 55. You're a man over the age of 45. So ये जो 10 साल है, इसमें the woman has a better chance of not getting a heart attack. Your father or brother had heart disease before age 55. So again, close relative. Your mother or sister had heart disease before the age of 65. So, but then the good news is that you can do a lot to prevent heart disease. But when does coronary artery disease happen? It happens when there is too much fat and cholesterol in the blood. So, आप देख सकते हैं, this is that blood artery that I'm always discussing with all of you. So इसमें जब आपको ये जो ऑरेंज कलर का एक अंदर में दिख रहा है, इट्स नॉट अ वेरी गुड पिक्चर, कॉन्ट्रास्ट नहीं है बहुत ज्यादा, बट ये जो आपको ऑरेंज कलर का यहाँ पे एक प्लाक सा दिख रहा है, दिस इज द प्लाक, एंड ये ही बढ़ते चले जाता है, एंड ये पूरा ब्लॉक कर देता है. यू कैन सी ये यहाँ से ये बढ़ रहा है, एंड ये दिस कैन जस्ट ये जो जगह है for the blood to pass, ये ब्लॉक हो जाती है. So if there is too much fat, then this encourages this plaque formation, fat and cholesterol. High blood pressure अगर आपको है, then आपकी जो arteries हैं ये सिकुड़ेंगे, and जब ये सिकुड़ेंगे तब ये जो जगह है, ये जो gap इनको close करनी है, ये और कम होगी, and this will be a problem as well. Smoking is inflammatory. बहुत सारे toxins आप अपने body में डालते हैं, so this causes inflammation. जहाँ inflammation होगा, यहाँ already inflammation हो रहा है, ये बढ़ते जाएगा. There is too much sugar in the blood because of diabetes, which means that आपका खून गाढ़ा होगा and it will cause heart problems. A lot of sugar will also increase the plaque formation.
So this is how it happens, coronary artery disease. The plaque builds up in the artery. फिर आपको angina होता है जब ये दोनों तरफ से आप देख रहे हैं प्लाक है and it's harder for the blood to get through. तो आपको पेन होना शुरू हो जाता है. And then अगर ये क्लोज ही हो जाए या फिर एक छोटा सा क्लॉट है, इसमें से एक टुकड़ा उठ के आता है, वो यहाँ फंस जाता है. So when there is a complete blockage, then you'll have an heart attack and this can be fatal. इसमें आपकी जान भी जा सकती है. So the red flag signs is again something that we can discuss. Pain or discomfort in the center or left side of the chest. अभी I think the pain के बारे में सर ने बहुत अच्छे से बताया, so I'll not repeat that. So वो chest pain आपको हो सकता है. It will be a feeling of pressure. It will be a squeezing sort of pain and बहुत भारीपन आपको लग सकता है. पेन इन द अपर बॉडी. सो अपर बॉडी में आपको कुछ जगह में पेन होता है तो आपको चेस्ट के साथ में देन यू हैव टू बी वरीड. सो लेफ्ट आर्म बैक में अगर आपको पेन होता है अलॉन्ग विद सम चेस्ट पेन. शोल्डर्स में अगर आपको पेन होता है तो नेक में पेन हो सकता है. जॉ जो है, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट बिकॉज अ लॉट ऑफ डायबिटिक्स रिपोर्ट जॉ पेन एज वेल. या फिर आपको अपर स्टमक में पेन होता है. सो अबव द बेली बटन इफ यू आर हैविंग सम सॉर्ट ऑफ पेन देन दिस इज आल्सो अ रेड फ्लैग साइन. सो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, अगर आपको सांस फूल रही है बात करते वक्त, काम करते वक्त, देन यू हैव टू बी वरीड. फीलिंग सिक टू योर स्टमक और थ्रोइंग अप. सो दिस इज आल्सो अनदर अगर आपको बहुत ज्यादा नौजिया हो रहा है, जी घबरा रहा है, उल्टी करने की जैसे इच्छा हो रही है along with chest pain, so this is another sign that this could be a heart attack. You need to be very careful. Stomach ache or feeling like you have a heartburn. तो बहुत बार जो sir I think very famously showed us this video of this. There was this movie video that we had seen. He had shown us कि there was this 3 बजे उसको लग रहा था कि मैंने इनो पी ली या मैंने पुदीन हरा खा लिया and he ended up with a heart attack. So there was so ये again heart attack. ये हार्ट बर्न जो है इसको इग्नोर ना करें. इफ यू आर हैविंग चेस्ट पेन, अगर साथ में आपको कभी सांस भी फूलने की तकलीफ होती है, बी वेरी केयरफुल and look into it and see if you've not tackled a heart attack, or if you've missed a if you have missed a heart disease in your system. So feeling dizzy, lightheaded or unusually tired, this is also another again ये nausea में ही आ जाता है. या फिर आपको ठंडे पसीने आ रहे हों, this is also ऐसा कुछ बहुत ज्यादा गर्मी में नहीं है लेकिन फिर भी बैठे बैठे पसीने आ रहे हैं, then you are again might be in trouble and you need to look into it. So you need to monitor your certain things regularly. आपकी जो कोलेस्ट्रॉल है और ब्लड प्रेशर है, these are the 2 very important parameters that you need to get checked. So कोलेस्ट्रॉल कहते हैं कि 5 साल में इसको हमें एक बार चेक करना चाहिए. And you need to just, if you're in medicine, then you can just check it every 5 years. You don't need to check it very frequently. And blood pressure जो है इसको regularly आपको, so I personally believe that आपको एक blood pressure की मशीन अपने घर में रखनी चाहिए if you have high blood pressure. अगर you've just had little bit of blood pressure problems, then it's fine. But अगर आपको कभी भी high blood pressure रहा है तो you should definitely, high blood pressure meaning 180 के ऊपर कभी भी गया है, then you definitely need to keep a blood pressure machine at home. So frequency of heart checkup, अगर हम देखें तो heart screening is generally recommended for everyone over the age of 20 years. 20 साल के ऊपर आपको करना चाहिए हार्ट चेकअप, आपको कम से कम एक बार. So जो फ्रीक्वेंसी है, this depends on the individual's risk factors and diagnosis, कितनी बार आपको कराना चाहिए. So अगर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है तो 2 साल में आपको एक बार कराना चाहिए. जो नॉर्मल रिस्क वाले पेशेंट्स हैं उनको अगर कोई कार्डियोवास्कुलर अबनॉर्मलिटी आई है तो देन आपको 2 साल में एक बार कराना चाहिए. लेकिन जिन लोगों को प्रॉब्लम खाली नॉर्मल रिस्क पेशेंट्स हैं जो, वो हर 4 साल में इसको करा सकते हैं. ब्लड ग्लूकोज लेवल्स आर रिकमेंडेड टू बी मेजर्ड एटलीस्ट एवरी 3 years. अगर आपको डायबिटीज नहीं है
एंड यू आर एब्सोल्युटली हेल्दी, तो हर 3 साल में आपको ब्लड ग्लूकोज की लेवल्स आपको चेक करानी चाहिए. एंड अकॉर्डिंग टू वेरियस रिपोर्ट्स, CRP लेवल्स जो हैं they should also be monitored, which is something that Dr. KK was talking about very frequently. So if I summarize, जिन लोगों को बहुत ज्यादा रिस्क फैक्टर्स नहीं है, नॉर्मल रिस्क वाले जो पेशेंट्स हैं, उनको हर 4 साल में अपना हार्ट का चेकअप पूरा कराना चाहिए. और जिन लोगों को कार्डियोवास्कुलर अबनॉर्मैलिटीज हैं, जिन लोगों को बीपी की परेशानी रहती है, कोलेस्ट्रॉल की परेशानी रहती है, हार्ट अटैक के रिस्क फैक्टर्स ज्यादा हैं, फैमिली हिस्ट्री है, या फिर आपको सांस फूलती है, आपको हर 2 साल में आपको चेकअप कराना चाहिए. So this is the frequency of the heart checkup. If you heard about a family member's risk for heart disease, you should ask your doctor about taking aspirin every day. So again, अपने आप ना लें. There are certain conditions, अगर आप इसमें aspirin लेते हैं तो you can land up into a lot of trouble. But if you are age 50 to 59, taking aspirin every day can lower your risk of heart attack and stroke, provided you need it. तो शुरू में यहाँ पे मैंने लिखा है टॉक टू योर डॉक्टर. इसके अलावा स्टैटिन्स के लिए भी आप अपने डॉक्टर से बात कर सकते हैं इफ यू थिंक दैट यू आर एट रिस्क फॉर हार्ट डिजीज, डिपेंडिंग ऑन व्हाट कंडीशंस यू हैव. सो रिस्क, सो स्टैटिन्स एंड एस्पिरिन. Then again, eating healthy is of paramount. It's paramount. You need to take care of that. आपको 7 रंग के खाने आपको खाना है. Alcohol should only be in moderation. फिजिकल एक्टिविटी आपको इनकॉर्पोरेट करनी है अपने लाइफ में. So again, as I say, 21 minutes per day or 105 minutes per week and 2 days of strength training exercises. ये सब को करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. You need to quit smoking. You need to manage your stress levels, because ये stress levels जो हैं, ये it puts you into a sympathetic state of mind and it causes problem for your heart. So that is just a summary. So these are the 7 signs of the healthy heart. I will just finish this and I'll end the show today. So heart rate, excuse me. So your heart rate, it should be between 60 to 100 beats per minute. Even agar there are some doctors who even prefer it to be beating in the 50 to 70 range, but then don't forget that 60 से लेकर 100 के बीच में आपकी हार्ट रेट होनी चाहिए. ब्लड प्रेशर 120/80 के आसपास ही होना चाहिए. अगर 130/80 भी है, then it is a little high and you need to go in for lifestyle management. एनर्जी लेवल आपके जो हैं ये एनर्जी लेवल्स जो हैं, अगर नॉर्मल लेवल्स पे नहीं है, हाई लेवल्स पे एनर्जी लेवल्स हमेशा नहीं रहते, एंड दिस मींस दैट यू आर अगर आपको फटीग बहुत जल्दी होता है, थक जाते हैं बहुत जल्दी, योर हार्ट माइट नॉट बी दैट हेल्दी. कोलेस्ट्रॉल लेवल्स अगर नॉर्मल नहीं है, देन यू माइट नॉट बी हैविंग हेल्दी हार्ट. आपकी आपकी जो हार्ट रेट की नॉर्मल होने की जो टेंडेंसी है, ये भी आपकी अच्छी होनी चाहिए. आई रिमेम्बर दैट देयर वाज अ गुड शो डन बाय दिस अबाउट हार्ट रेट वेरिएबिलिटी. तो आपकी हार्ट रेट वेरिएबिलिटी जो है ये अच्छी होनी चाहिए. जब आप कोई काम करते हैं तो हार्ट रेट बढ़ती है एंड बहुत जल्दी नॉर्मल भी हो जाती है. ये एक अच्छा साइन है. Good oral health is really important as well, because a lot of times you can get some infections in your oral cavity. आपको मुंह में कोई ना कोई दांत में कोई infection हो सकता है, and this can travel to your heart, and if your heart is not healthy, then this can cause more problems. So and it can even cause arterial inflammation. Infection in general can cause arterial inflammation, and this will also cause problems for your heart. So अगर आपकी breathing भी healthy नहीं है, then also you need to be a little अगर आप थोड़ा सा ही कुछ काम करते ही बहुत सांस फूलने लगती है, then also you need to be worried that your heart is not healthy. So एक सवाल यहाँ है, what is heartburn acidity? Is heartburn acidity a symptom that you have a heart blockage? No, it's not. But sometimes a heart attack, जो heart attack का जो sign heartburn जो है, it might mimic, वो उसके जैसे लग सकता है.
जो हार्ट बर्न का जैसा पेन होता है वैसा सिमिलर पेन हो सकता है. सो यू नीड टू बी एबल टू डिफरेंशिएट एंड यू नीड टू स्पीक टू योर डॉक्टर कि मेरे को ये पेन हो रहा है, इज दिस अ हार्ट बर्न और इज इट अ हार्ट अटैक. बट देयर इज नो कोरिलेशन बिटवीन एसिडिटी symptom and the heart attack का symptom. There is no correlation. But ये दोनों similar हो सकते हैं, तो your doctor needs to tell you what it is. How to reverse metabolic syndrome. So we have done multiple, Rajneesh ji, we have done multiple topics and we've done multiple shows on anti-inflammatory lifestyle. तो इसको follow करिए, आपको इसकी link जो है हम यहाँ पे आपको दे रहे हैं. लोगों ने यह भी पूछा what is troponin test. So I'll come into I'll come on to the diagnostics in the next session. I have just discussed the FAQs at the moment. So troponin test usually वो होता है, हम जब किसी को heart attack हम suspect करते हैं, so troponin test हम करवाते हैं to see if there is if the heart is healthy or not, or if there is a heart attack in the body or not. We'll talk more details into it later. But usually अगर एक heart attack होता है patient को, तो उनका troponin levels जो हैं ये high होते हैं. And they will be quite high as compared to the normal levels. And इसके साथ में अगर high ना भी हो तो 4 घंटे बाद में इस टेस्ट को कराना compulsory होता है. Don't just get one test done and think that you are absolutely in the clear and you don't need to do anything else. 4 घंटे बाद definitely you need to repeat the troponin test. So on that note, I'd like to end the show today. Thank you everyone for joining in.